Students, now we are going to start our next method to find out the roots, and that is the Newton's method. And in some of the books, it is written that the name of this method is Newton-Raphson's method. So scientist was Newton-Raphson. So you can, if there is written that this is Newton-Raphson method, it means the same as the Newton's method. So students, this is a very simple method and a very classic algorithm to find out the root of the function. And it is often introduced in the calculus, and and it is considered as the application of the derivative of the function. तो बेटा आपको बताता चलूं कि सबसे पहली बात यह है कि न्यूटन मेथड, द पर्पस ऑफ न्यूटन मेथड इज टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन. जिस तरह हमने पहले बाइसेक्शन मेथड पढ़ा, if we simply compare the bisection method with the Newton method, so we can simply say that Newton's method is much faster than the bisection method. जिस तरह बेटा उसके अंदर बाइसेक्शन में हम इंटरवल्स को हाफ ऑफ करके बड़ी स्लो प्रोसेस के जरिए हम एक कन्वर्जेंस हमारी होती थी, या हम कह सकते हैं कि इट वाज वेरी स्लो प्रोसीजर टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन. बट इफ वी सिंपली लुक एट न्यूटन्स मेथड, so you can see that it is rather fast converging method. So the first of all, we will see what is the method and how it works basically. सबसे पहले अगर बेटा आप आइडिया समझ जाते हैं, if you simply understand the idea, तो फिर मेरा ख्याल है आपके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी. तो ये किस तरीके से हम न्यूटन मेथड में जो है वो रूट किस तरह निकालते हैं. लेट्स से वी हैव एनी फंक्शन. इन द बिगिनिंग वी आर नॉट गिवन विद द फंक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास शुरू में कोई नहीं है, आपके पास कोई भी कर्व नहीं है, हमने ये बेसिकली खुद ड्रॉ किए हैं. हम जिस तरह हमने बाइसेक्शन मेथड में देखा, हमें कर्व ड्रॉ करने की ऐसा जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको बताने के लिए कि वेयर द रूट इज लाइंग, and if we simply assume that we know the root of that equation and how we approach the root by using the Newton method. So this is our idea here, or this is our methodology here. So students, let's say if we have these axes, and if we have the curve here, and in this case, let's say this is your interval. So interval of this curve is, let's say, this point and this point. And now students, what is your actual root here? Your actual root is basically this point is your actual root. So this red dot is your actual root. So students, the main idea is our equation is given, our function was given. So we actually want to reach this point, to reach this goal. So what is our first step? The first step is, as you can see in the next slide. So first step is that you just choose any initial guess, any point on the x-axis. Say this is your x naught. Now, this is your initial guess. You simply feel that this is your approximate root. You simply assume that. So this is your first root, or the first guess, or you can say that this is your initial guess. Or since your actual goal was to find out the exact root, but since you don't know the exact value in advance, you don't know the value at that time, you don't have the curve, you don't know the exact value of the root. So what you do is, so you simply choose an initial point and you simply assume that this is your approximate root. Now, if you simply have this x naught to be the initial guess, now what you do? At this time, at this point, the coordinates will be x naught f of x naught or x naught y naught. So this is the point now on the curve here. Any function, if you are given any function, so you can simply take a point x naught, and now at that x naught, definitely there may be, but it is not exactly true. I will show you an example where you will see that if you have an initial guess to be x naught,
and maybe this will have no point on the function because maybe this point is out of the bound, out of the curve. So I will give you the example, inshallah, don't worry. So this is your point, initial guess, and the curve at this x where x naught is there. So the coordinate is x naught y naught or x naught f of x naught. So student, what is now the next step? The next step is that you find out a tangent line on this point. See here, like you can see this one. So this is a tangent line. Student, forget about this one. First of all, just look at this line. So this is a tangent line, and you know the definition of the tangent line, that this is the line which touches the curve at one point only. And what is that point? This is the point, x naught, y naught. And student, this tangent line, definitely, if you make this tangent line, so maybe this will touch the x-axis, the x-axis. And what is that point? Let's assume that that is your next approximate route. See, in most of the cases, you are approaching towards the root. So it was initially it was x naught, now it is x1. So similarly, students, on the same way, in the similar way, on the same lines, now this is the point x1, and this was the point on the curve. And now once again make a new tangent line. So now what happens? There is a new point here. Students, see, this one is a new point, and that is your x2. Now the root, approximate root, is x2. So it means you are coming closer and closer. So now once again, student, what we are going to do, take another tangent line at this point. See, so this is another tangent line, and now you can see that x3 is very close to your actual root, and this is your approximate value of the root. So this is basically your answer. If you want to further improve its quality, then you take the next value. Maybe x4 will be definitely better than this x3. तो बेटा मैं एक दफा फिर जो है वो रिपीट कर देता हूँ इस सारे प्रोसेस को कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास कोई भी जो है वो एक फंक्शन गिवन है। शुरू में तो हमें पता नहीं है कि वो हमारे पास कौन सी किस तरह की कर्व देगा, लेकिन अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कर्व जो है वो इस तरह की शायद हो। कोई बात नहीं, अब हमने जस्ट एक अज्यूम किया है, हमें तो शुरू में कर्व ना बनाने की जरूरत है जिस तरह के बाइसेक्शन मेथड में था। बेटा हमने कर्व बनाई नहीं थी, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है तो सिर्फ कर्व एक जनरेट की जा सकती है। अब इस केस में हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट रूट कौन सा है बेटा, जहां पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो दिस इज योर रेड डॉट इज योर एक्चुअल रूट। अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक इनिशियल गैस ले लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो इंटरवल है इस कर्व के लिए वो ये इंटरवल है, बास का इंटरवल दिया होता है, तो आपने इनिशियल गैस जो है वो उसी इंटरवल के बीच में लेना है, ना कि आप इधर उधर लेंगे, उसी के बीच में आप लेंगे, आप बाहर नहीं लेंगे। और बियॉन्ड एक्स एक्सिस या वाई एक्स एक्सिस दोनों तरफ नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड आपने इंटरवल से बाहर नहीं लेना बेटा। आपने कोई भी एक इनिशियल गैस ले लिया, फर्स्ट करेंगे इनिशियल गैस था ये वाला पॉइंट। अब क्या हुआ, इस पॉइंट को देखें कि ये कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट है, वहां पे डेफिनेटली इसके जो दूसरा पॉइंट होगा वाई एक्सिस का वो भी आपके पास आ जाएगा। वो आपके पास पॉइंट कौन सा है, एक्स नॉट वाई नॉट। बेटा अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखिए आपके पास एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट बेटा आप देखेंगे कि ये इस एक्सिस को एक्स एक्सिस को कट करता है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसको आपने नया नाम दे दिया, दैट इज x1। अब आप क्या करें, x1 पॉइंट अगर इसके यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला पॉइंट आएगा। ये जो पॉइंट बेटा आपके पास आएगा, ये पॉइंट, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये देखिए एक और टेंजेंट आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये तीसरा पॉइंट आ गया, एक और पॉइंट आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया, x2 का नाम दे दिया। अब बेटा यहाँ पर इसी के वर्टिकल डायरेक्शन में आपने कर्व के ऊपर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दैट इज दिस टेंजेंट। तो उसके बाद बेटा आपने क्या किया कि अब आपके पास जो है
वो आपका टेंजेंट बन चुका है और नया पॉइंट आ गया। अब नया पॉइंट देखें कट कर रहा है, जहां पर वो रेड डॉट के ऊपर से कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अप्रोक्सीमेट अब रूट निकला, इसका मतलब है वो एक्चुअल रूट के बिल्कुल करीब आ गया। स्टूडेंट अगर आप फर्दर आप करते भी रहेंगे तो आप इसी रूट के अबाउट ही, इसी के ऊपर ही मजीद रिफाइन होते जाएंगे, मजीद बेहतरी आपके पास जो है वो आपके पास आती जाएगी। सो दिस वाज द आइडिया बेसिकली कि किस तरीके से बेटा आप क्या करते हैं कि रूट जो है वो आप फाइंड आउट करते हैं। ये तो आपको मैंने एक ये कह लें कि ग्राफिकली बताया कि किस तरह हम अपने जो है वो मेथड पे आप अप्रोच करते हैं। तो अब हम बेटा ऐसा करते हैं कि इसकी डेरिवेशन करते हैं, फिर हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो आपका क्या बनेगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं।